lungs, L-U-N-G-S, lungs. A pair, P-A-I-R, pair of, O-F, of lungs, L-U-N-G-S, lungs, is, I-S, is present, P-R-E-S-E-N-T, present inside, I-N-S-I-D-E, inside the, T-H-E, the chest, C-H-E-S-T, chest. Two, T-O-O-2, right, R-I-G-H-T, right, lung, L-U-N-G, lung, and left, L-E-F-T, left lung, L-U-N-G. They, T-H-E-Y, they are, A-R-E-R, air, A-I-R, air, field, F-I-L-L-E-D, field, bags, B-A-G-S, bags, which, W-H-I-C-H, which, help, H-E-L-P, help, us, U-S, us, to, T-O-2, breathe, B-R-E-A-T-H-E. So in this, a pair of lung is present inside the chest. हमारे चेस्ट के अंदर पेयर ऑफ लंग प्रेजेंट होता है. लंग्स जो हैं वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं. कहाँ पे होते हैं? चेस्ट के अंदर. राइट लंग होता है और एक लेफ्ट लंग होता है. दे आर एयर फिल्ड बैग्स विच हेल्प अस टू ब्रीथ. वो हमारे एयर फिल्ड बैग्स होते हैं और हेल्प करते हैं हमें ब्रीथिंग में, सांस लेने में. This is the picture of lungs. Where, W-H-E-R-E, where, does, D-O-E-S, does, the, T-H-E, the, food, F-O-O-D, food, we, W-E-V, eat, E-A-T, eat, go, G-O, go. Where does the food we eat go? जो हम खाना खाते हैं वो कहाँ जाता है? Do you know कहाँ जाता है? Yes, it's go inside the stomach. Now let us study about it. We, W-E-V, eat, E-A-T, eat, food, F-O-O-D, food, from, F-R-O-M, from, the, T-H-E, the, mouth, M-O-U-T-H, mouth, and, A-N-D, and, it, I-T, it, goes, G-O-E-S, goes, into, I-N-T-O, into, our, O-U-R, our, belly, B-E-L-L-Y, belly, inside, I-N-S-I-D-E, inside the, T-H-E, the, belly, B-E-L-L-Y, belly, is, I-S, is, the, T-H-E, the, stomach, S-T-O-M-A-C-H, stomach, it, I-T, it, digest, D-I-G-E-S-T-S, digest, our, O-U-R, our, food, F-O-O-D, food. We eat food from the mouth and it goes into our belly. हम माउथ से, दिस इज़ अ माउथ, हम माउथ से फूड को खाते हैं और वो कहाँ जाता है? इट्स गोज़ हमारी बेली में. और हमारी बेली के इनसाइड क्या है? स्टमक. क्या है हमारी बेली के इनसाइड? इट्स स्टमक. इट डाइजेस्ट अवर फूड. ये हमारा क्या करते हैं? फूड को डाइजेस्ट करते हैं, पचाते हैं जिसे हम कहते हैं. नाउ टुगेदर, T-O-G-E-T-H-E-R, टुगेदर, द, T-H-E, द, ब्रेन, B-R-A-I-N, ब्रेन, हार्ट, H-E-A-R-T, हार्ट, लंग्स, L-U-N-G-S, लंग्स, एंड, A-N-D, एंड, stomach, S-T-O-M-A-C-H, stomach, R, A-R-E-R, called, C-A-L-L-E-D, called,
Internal, internal, internal organ, organs, organ. Because, because, because they, they, they are, are inside, inside, inside our, our body, body, body. Together, the brain, heart, lungs, and stomach are called internal organs because they are inside our body. जो हमारे हार्ट, ब्रेन, लंग्स, स्टमक हैं उसे हम इंटरनल ऑर्गन कहते हैं. क्यों कहते हैं? बिकॉज ये कहाँ होते हैं? इनसाइड आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं. इनसाइड आवर बॉडी. We, we have, have many, many, many other, other internal, internal, internal organs, organs, organs also, also. We have many other internal organs also. हमारे पास और भी internal organs होते हैं. All, all, our sense, sense organs, organs, organs are, are outside, out, side, our, our body, body, so, so, they, they are, called, called external, external, external organs, organs, organs. All our sense organs are outside our body, so they are called external organ. जो भी हमारे सेंस ऑर्गन हैं वो हमारी बॉडी के कहाँ हैं? आउटसाइड हैं. सो वो हमारे क्या हुआ? एक्सटर्नल ऑर्गन. Internal organ means inside the body. External organs means outside the body. That's all about the chapter. In this chapter, you have learned about brain, heart, lungs, stomach, internal organ and external organ and our 5 sense organ. Before starting the classwork work and book work, in next period or in next lecture, I will summarize this chapter first. So be prepared and do reading with your parents